हैं, हमको है इंद्रियों ने भरी माया, हमको है इंद्रियों ने भरी माया, पाके नर तन का खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। देखो पर्याय तो है क्षण भंग, देखो पर्याय तो है क्षण भंग, फिर भी पर्यायों में है इतराया, फिर भी पर्यायों में है इतराया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। तू तो टंकोट कीर्ण गायक है, तू तो टंकोट कीर्ण गायक है, बस यही बात समझ नहीं पाया, बस यही बात समझ नहीं पाया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में अब ठहर जाऊं, एक क्षण निज में अब ठहर जाऊं, आखिरी क्षण बस यही आया, आखिरी क्षण बस यही आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया।
વ્યાખ્યાની છે સકળ જગત હિત તારીણી. શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ચાલે છે. પત્રકા વિષય જીવને માર્ગ મળ્યો નથી, એનું શું કારણ? अनादिकाल से जीव को सुखी होने का मार्ग यानी कि अंतर्मुख होने का मार्ग मिला नहीं है। इसका क्या कारण है? फिर कहते हैं कि हमें लगता है कि मार्ग सरल है। मार्ग कोई कठिन नहीं है, भले अनादिकाल से मिला नहीं हो तो भी, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. जो कठिनाई है ये समागम ज्ञानी का होना, उसकी पहचान होना और आत्मकल्याण की तीव्रतम भावना होना, ऐसा अंतर्बाह्य योग मिलना दुर्लभ है। इसलिए अनादिकाल से जीव को मार्ग नहीं मिला है। 225 पेज तक आए हम। लास्ट में ऋषभदेव भगवान का उदाहरण चला था कल। नीचे से तीसरी લીટી, જે કાળ પ્રારંભ થયો,
જે કાળમાં મુનિને યથાર્થ વિધિથી આહારદાન મળે એ काल જ नહોતો। तीसरा आरा का अंत में क्या किसी को पता नहीं था कि मुनि को किस विधि से आहार देना, छता ये कालનો प्रतिबंध एमने मोक्ष मार्ग में नહોતો नड्यो। फिर भी ये उनको कोई रुकावट का कारण हुआ नहीं। एम बहारना संयोगों અને બહારના ક્ષેત્રો એનો પણ પ્રતિબંધ મુનિ દશામાં નથી હોતો। नीचेना गुणस्थान में यानी चौथे पांचवें ये नीचे का गुणस्थान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव नो प्रतिबंध नड़े छे, भाव प्रतिबंध नहीं होतो। भावनी अंदर ए पोताना आत्मा में सततपणे निरंतर अविच्छिन्न धारा थी वेद ज्ञान में प्रवर्ते छे। क्या कहते, भाव प्रतिबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपने आत्मा में सततपणे, सतत विदाउट ब्रेक, और निरंतर को भी विदाउट ब्रेक अविच्छिन्न धारा थी वेद ज्ञान में प्रवर्ते छे। वेद विज्ञान चलता है, निरंतर चलता है, अने यथा समय शुद्ध उपयोग में आवे छे। वेद ज्ञान चलता है और कभी कभी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है, फिर वापस वेद ज्ञान में प्रवर्ते छे अने यथा समय शुद्धोपयोग में आवे छे। फिर वापस शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। एवा भाव अप्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे छे। निचला गुणस्थान में द्रव्य क्षेत्र काल नो प्रतिबंध होता है उनको। समझ में नहीं आया था साहब कि द्रव्य क्षेत्र काल में मतलब किस तरह से लेते हैं। तो इसमें लिया नहीं है तो मुझे भी थोड़ा पता नहीं है। पंडित जी को पता है तो ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान में सिर्फ भाव प्रतिबंध होता है ऐसा लिया ना, बाकी तीन का क्या अर्थ है? उसी काल में उनको मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, तो काल का तो बराबर समझ में आ गया ना। और क्षेत्र भी जो है, क्षेत्र से भी ये जो है भरत क्षेत्र है, पंचम काल है, वैसे लग जाएगा सब जो। लेकिन मुनिराजों को ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है उनको। वो तो उसी काल में चले गए ना मोक्ष, उनको कोई प्रतिबंध आड़े नहीं आया कि निचले वाले को आएगा वो जो है। और पंचम गुण आरा में भी जो मुनिराज होते, कुंदाचार्य आदि, उनको भी बाहर का जो 4 प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, वो अंतर्मुख कभी भी हो जाते हैं। भाव अप्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे छे, एनी अनिर्स एवी दशा छे। 24 घंटे दिवस और रात एवी दशा छे। एवा ज्ञानी पुरुष तेना चरणारविंद एटले चरण कमल, अरविंद एटले कमल, तेना प्रत्ये अचल प्रेम थया विना, एटले एटली नम्रता आव्या विना, ज्ञानी पुरुष प्रत्ये एटलो भक्तिभाव अने नम्रता आव्या विना, अचल प्रेम में क्या लिया कि
एक तो भक्ति भाव और नम्रता आव्या विना अने सम्यक प्रतीति आव्या विना ये ज्ञानी है, ऐसी पहचान पूर्वक खातरी होना, ये सम्यक प्रतीति, वो पहला संकित है ना, वो पहला संकित। आ ज्ञानी छे, सत्पुरुष छे एवी ओळखाण आव्या विना सत स्वरूपनी एटले पोताना आत्म स्वरूपनी प्राप्ति थती नथी। पोताना शुद्धात्म पदनी प्राप्ति थती नथी अने आव्यથી એટલે અચળ પ્રેમ અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેના ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે તેની દશાને પામે છે। એટલે તે ક્રમે કરીને જ્ઞાની થાય છે। आ मार्ग सर्वज्ञानियों सेव्यो है। जितने भूतकाल में ज्ञानी हुए ये सब यही मार्ग से चले हैं। आज भी अगर कोई ज्ञानी होगा, बनेगा, क्योंकि पंचमारा के अंत तक ज्ञानी का सद्भाव है, ऐसा आगम में आया है। तो आज भी कोई ज्ञानी होगा और भविष्य में भी कोई ज्ञानी होगा तो यही मार्ग से वो ज्ञानी होगा। पण ये तो सीधी बात है, कैंसर थाय तो ज्यां कैंसर मटे एने गोते, कोण मटाडनार छे अने क्यां मटाडनार छे ए एना माटे जावा न नाखे तो शुं करे? प्रयत्न उसको ढूंढने का न करे तो क्या करे? एम जेने खबर पड़ी कि आ जन्म मरण छे एनो रोग भवरोग जेने कहे छे ए कैंसर नो बाप छे, एनी जेने खबर पड़ी गई ये गोते, जिसको ऐसा भाव भाषित हुआ ये तो ये महारोग है और इसके फलस्वरूप अनंत दुख भोगना पड़ता है। ऐसा भाषित जिनको हुआ वो ज्ञानी की शोध करता है। कौन वेद छे आनो, कौन आत्मज्ञानी छे, कोने भव ब्रह्मण मटाड्યું છે? ज्ञानी ने क्या किया है कार्य कि भव ब्रह्मण का नाश किया है। कोण भव ब्रह्मण मटाडવાનો उपाय बताड़ी सके एम छे? माथुं सड़ी जाए छे। ये विचार और चिंतना वेदना चलती है, माथुं सड़ी जाए छे, बीजू काई रहे नहीं, एने गोते ज छूटको, त्यां सुधी एने शांति थती नथी। एवी खोज करे ये एक बहु स्वाभाविक बात है। तो यहाँ जो अचल प्रेम की जो बात आई वो दूसरा एक पत्र जो है 470 उसमें थोड़ा विषय चला है। पत्रांक 470 त्रिभुवनभाई उपरनो पत्र छे। आगळ एक पत्र 467मो चाल्यो ए पण घणुं करीने त्रिभुवन माणिकचंद उपरनो छे। ज्ञानी पुरुष प्रत्ये अभिन्न बुद्धि थाय ए कल्याण विशेनो मोटो निश्चय छे एवो सर्व महात्मा पुरुष नो अभिप्राय है। ये कृपालुदेव का वचन है। 470
अच्छा यहाँ नहीं है. અમારો અભિપ્રાય છે એટલું જ નહીં, જેટલા મહાપુરુષો થયા, જ્ઞાની થયા, એ બધાનો આ અભિપ્રાય છે કે કોઈ જીવને જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે અભિન્ન બુદ્ધિ થાય. અભિન્ન બુદ્ધિ થાય એટલે પરમ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, અત્યંત લાગણી હોય. अभी उदाहरण देते हैं किस प्रकार की, जेम देह थी अभिन्न बुद्धि है, ये जो शरीर है क्या, उसके साथ जीव की अभिन्न बुद्धि है. अज्ञान दशा में तो अभिन्न बुद्धि होती है, तो देहनी सावधानी वर्ते છે. देह માટે શરીરમાં એની સાવધાની સતત ચાલે. દેહનું મમત્વ વર્તે, દેહ પોતાને अपना शरीर में मोह वर्तता है, શરીરમાં પોતાપણું વર્તે. શરીરમાં કાંઈ પણ અનિષ્ટ ન થાય. અનિષ્ટ માને નુકસાન, તકલીફ, રોગ શરીર में ન થાય એ પ્રકારનું પરિણમન સદાય निरंतर चालू रहे. ऑटोमेटिक ये चल रहा है अंदर में. क्या? शरीर की सावधानी. शरीर में कई प्रॉब्लम थाय, दुख आवे, रोग आवे, तो शू थाय के तरत ज ध्यान एमां जाय, एनी सावधानी चालू रहे छे. एम ज्ञानी पुरुष प्रत्ये पण एवी परम प्रेमनी बुद्धि थाय. अत्यंत लागणी वाली के कांईक थवुं होय तो भले मने थाय पण एमने कांई थवुं जोईए नहीं. एवी ज्ञानी पुरुष प्रत्ये अभिन्न बुद्धि थाय. ए कल्याण विशेनो मोटो निश्चय है. जीव का आत्म कल्याण के लिए ये बड़ा जीव का निश्चय है. एवो जे प्रकार उत्पन्न थाय तो जेने अभिन्न बुद्धि थाय छे एवा जीवनु अवश्य कल्याण थशे. अवश्य कल्याण थशे एवो महात्मा पुरुषों ने सारी रीते, मोटो एटले सारी रीते थयेलो आ निश्चय छे. आ एक एवं लक्षण छे के जेमा आत्मानु कल्याण निहित छे, एमां समायेलुं छे. आत्मानु कल्याण आत्मानु कल्याण एमां रहेलुं छे. ए जीवनु एमां अवश्य कल्याण थवानी वात रहेली छे. मूळ तो आ त्रिभुवनभाई ने कृपाळुदेव प्रत्ये जरा विशेष बहुमान अने प्रेम हशे एवं पत्र द्वारा लागे छे. एमने अने एमना पत्नी ने बंने ने आ पत्र उपरथी एम लागे छे. तमे तथा अन्य वेदे जेनो देह हाल वर्ते छे. क्या कहते हैं? तमे एटले त्रिभुवनभाई तथा ते अन्य वेदे. त्रिभुवनभाई पुरुष है और उनकी पत्नी है, उसका अन्य देह, अन्य वेद है, स्त्री वेद है, यहाँ पुरुष वेद है. क्या? अन्य वेद है जेनो देह हाल वर्ते छे, आत्मा वर्ते छे एम नहीं. तमे तथा ते अन्य वेदे, अन्य वेदे एटले तमे तथा ते अन्य वेदे जेनो देह हाल वर्ते छे. तमे तथा ते, तमे अने तमारा
પત્ની, એટલે એના ઘરેથી. અન્ય વેદે એટલે તમે પુરુષ વેદ છો, એ પુરુષ વેદ નથી, એ સ્ત્રી વેદ છે, પણ દેહ એમનો વર્તે છે. આત્માને એ દ્રષ્ટિએ નથી જોતા. તમે તથા જે અન્ય વેદે જેવો દેહ હાલ વર્તે છે તે બે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે જેમ અભિન્નતા વિશેષ નિર્મળપણે આવે તે પ્રકારની વાત પ્રસંગોપાત કરો. दोनों कृपाणु देव को मानते हैं, पति और पत्नी. બંને જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે જેમ અભિન્નતા એટલે ભેદભાવ નહીં, એનું નામ અભિન્નતા. બે વચ્ચે ભેદ નહીં એવો જે ભાવ એ વિશેષ નિર્મળપણે આવે. ભેદ હોય તો એવું નિર્મળપણું આવતું નથી, મારું તારું થઈ જાય. એમાં નિર્મળતાનો પ્રકાર છે. બીજું કોઈ એની અંદર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કોઈ પણ કશાયનું કારણ નથી. બે વચ્ચે જો નિર્મળતાનો પ્રકાર હોય તો એની અંદર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કોઈ પણ કશાયનું કારણ નથી, કશાયનું અવલંબન નથી. એક આત્મહિતને કારણે, આત્મહિતના હેતુએ અવલંબીને બીજો કોઈ પ્રકાર નહીં. વિશેષ નિર્મળપણે આવે તે પ્રકારની વાત પ્રસંગોપાત કરો. તમારા બેની વચ્ચે નિર્મળપણે, વિશેષ નિર્મળપણે આવે તે પ્રકારની વાત પ્રસંગોપાત કરો. જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે એવી વાત કરો. એવી વાત કોઈ નીકળે ત્યારે એ વિશેષ પ્રકારે એવી વાત કરો તો કે તે યોગ્ય છે. શું એટલે કંઈક પત્ર એમણે લખ્યો હશે ત્રિભુવનભાઈએ, એના ઉપરથી એમણે એ લખ્યું છે કે એ યોગ્ય છે. અને પરસ્પરમાં એટલે તેઓ અને તમ વચ્ચે નિર્મળ હેત વર્તે. પતિ પત્ની વચ્ચે નિર્મળ હેત વર્તે, કારણ કે બે મુમુક્ષુ છે અને પતિ પત્ની પણ છે. તો તમારા આપસમાં પણ નિર્મળ હેત વર્તે. એમ પૂછ્યું હશે કે અમારા બે વચ્ચે નિર્મળ હેત વર્તે છે, હા, તેમ પ્રવર્તવામાં બાદ નથી કે છે, એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ તે હેત જાત્યાંતર થવું જોઈએ, યોગ્ય છે. શું એની જાતિ બદલાવી જોઈએ. કે એક સાધર્મી તરીકેનો આત્મકલ્યાણમાં સત્સંગમાં રહે છે એ અર્થે એ પ્રકારનો પ્રેમ અરસપરસ રહે. અને બીજો જાત્યાંતર એટલે સંસારિક સંબંધની લાગણી નહીં. પતિ પત્નીને જે સંસારિક સંબંધની લાગણી છે એવું નહીં. કે એને જાત્યાંતર કહે છે. બીજી જાતનો કયો? ધાર્મિક પ્રેમ એ બીજો વિષય છે અને સંસારિક પ્રેમ એ બીજો વિષય છે. એટલે પતિ પત્નીમાં પણ આવો પ્રેમ મુમુક્ષુ થાય ત્યારે હોવો જોઈએ, એમ કે છે. નિર્મળ હેત, તમારા બંને વચ્ચે નિર્મળ હેત વર્તે તેમ પ્રવર્તવામાં બાદ નથી. प्रश्न पूछा है क्या कि हम दोनों के बीच में दोनों सत्संग कर रहे हैं, कोई प्रसंग में प्रकार की बात आती क्या कि हम दोनों के बीच में निर्मल हेत वर्ते से. निर्मल में क्या लेना और संसार का प्रेम में क्या लेना? संसार का जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है और निर्मल प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है. सिर्फ दोनों अपना आत्मकल्याण का कार्य पूरा करे ऐसा
संबंध है, इसको निर्मल हेत કહેવામાં આવે છે। બહુ સરસ વાત કરી છે ને। એમાં બી જે બે જણા ધર્મમાં જોડાણા છે પતિ પત્ની, એના માટે તો આ બહુ સરસ વિષય એમને લીધો છે। એ ત્રિભુવનભાઈએ પૂછાયું છે અને એનો ઉત્તર એમને આપ્યો છે। એટલે અરસપરસ એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ લાગણી હોય એનો બાદ નથી કે તમે આગળ વધવામાં એ કઈ રૂકાવટ નહીં થાય કે શું? જે સંસાર સંબંધીનો જે પ્રેમ છે એ તમને અવશ્ય આગળ નહીં વધવા દે। પણ જાત્યાંતર થવું તે યોગ્ય છે। જાત્યાંતર, જાતિનું અંતર એટલે જાતિ બદલાય અને જાત્યાંતર કે શું? એટલે આ જાતમાં આવવું યોગ્ય છે, ओली जात में जવું योग्य नहीं। संसार में जो प्रेम है पति पत्नी या जो भी कुटुंबी जन का, वो जाति नहीं होनी चाहिए कहते हैं, क्योंकि उसमें तो स्वार्थ है। मैं जो कहता हूं वो आप करो, नहीं तो क्या होगा? समझाई से? यहाँ निर्मल हेत की बात है कि हम दोनों मिलकर मोक्ष की प्राप्ति करें। क्या आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूं, और एक दूसरे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मत्सर्य भाव नहीं है वहां, जलसी का भाव नहीं है कि मैं तुमको आगे नहीं बढ़ लूंगा, मैं तुम्हारे से आगे मैं बढ़ जाऊंगा, ऐसी बुद्धि नहीं है, वो निर्मल हेत नहीं है। समझाई से कि नहीं? कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन एक वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। आज के जमाने में ये कंपटीशन है ना, वो खराब वर्ड है आज के जमाने में। क्या? और उसके लिए वो कुछ भी करता है कंपटीशन के लिए, हाँ बराबर ना? हाँ, यहाँ क्या फर्क है कि दो में से तो एक आगे रहेगा ना, तो दोनों का सेम लेवल तो कभी होगा नहीं। क्या? जो जितना प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जिसका कम प्रयास रहेगा वो पीछे रहेगा, दो में से कोई भी। तो जो आगे बढ़ा है उसने प्रयास किया है, इसलिए वो आगे बढ़ा है, तो उसका प्रमोद भाव दूसरे को आता है, मत्सर्य भाव नहीं आता है, जलसी का भाव नहीं आता है। ये फर्क है। जैसे बाप को अपना बेटा धंधे में आगे बढ़े तो एने શું થાય? जलसी થાય, जलसी કે ખુશી થાય, અને બધાને કહેતો ફરે। समझ में आ रहा है कि नहीं फर्क? ऐसा भाव। हाँ, સંસારની જાતમાં જવું યોગ્ય નથી। સામાન્ય રીતે પતિ પત્ની વચ્ચે પ્રેમ હોય છે, પણ તે જાત્યાંતર થવું યોગ્ય છે। पहले तो संसारिक प्रेम से जुड़े हैं, और फिर जब मुमुक्षु बनते हैं तो ये चेंज आता है। आ जातમાં આવવું યોગ્ય છે। સાધર્મીપણામાં, સત્સંગીપણામાં નિર્મળ હેત હોવો જોઈએ, સંસારિક નહીં। હવે બધામાં લઈ લીધું, જેટલા સત્સંગીઓ છે
એ બધા વચ્ચે પણ નિર્મળ હેત હોવું જોઈએ. समझाए છે कि ये मत्सर्य भाव नहीं होना चाहिए. ये मेरे से उसको मैं पीछे नीचे कैसे लाऊं, आगे कैसे बढ़ाऊं, उसका दोष ज्यादा दिखाकर उसको नीचा कर दूं, उसका गुण को देकर प्रमोट. कहते हैं कि साधर्मीपणाમાં सत्संगीपણામાં पाछू साधर्मी के ने એટલે એમાં ज्ञानी और ज्ञानी के बीच में એટલે सत्संग में यह शब्द ले लिया. क्या सत्संगीपणाમાં निर्मल हेत હોવો જોઈએ, તારીખ નહીં. સત્સંગ જે લોકો કરતા હોય એ બધા વચ્ચે નિર્મળ હેત હોવું જોઈએ. જેમ સ્ત્રી પુરુષને કામાદિને કારણે હેત હોય છે તેવું હેત નહીં. એ કૃપાળુદેવ કલાઈને આ સ્પષ્ટ કર્યું. પણ જ્ઞાની બંનેનો ભક્તિ રાખશે, એક સરખો એક રાખશે, એક પ્રકારનો પ્રશસ્ત રાખશે, એવું બે એક ગુરુ જોઈ. दो शिष्य होते हैं, उनको एक गुरु के प्रति जैसा होता है, એટલે કે એક ગુરુ પ્રત્યે બે શિષ્યનું બહુમાન હોય તો એક સરખી સ્થિતિ થઈ ને એ પ્રકાર જોઈએ. અને નિરંતરનો સત્સંગ રહ્યા કરે છે એમ જાણી અને ઘરમાં સાથે હોવાથી પતિ પત્ની સાથે घर में होने पर अरस परस नो सत्संग रहा करे छे, एक बीजानी साथे सत्संग अरस परस रहा करे छे एम जानी भाई जेवी बुद्धि है, भाई जैसा बुद्धि है, साधर्मी भाई जेवी बुद्धि है. कोई साधर्मी भाई हो उसके लिए कैसा हमारा प्रेम है, वैसा ही प्रेम पत्नी को पति के लिए. भाई साधर्मी भाई जेवी बुद्धि है तेवे हेत वर्ताय ते बात विशेष योग्य छे. लो योग्य छे कीधुं, अयोग्य नहीं. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે ભિન્નભાવ સાવ ટાળવા યોગ્ય છે, જરા પણ અંતર રાખવા જેવું નથી. જ્ઞાની પુરુષ અને પોતાની વચ્ચે કોઈ અંતર રાખવા જેવું નથી. જેમ પોતાની જાત વિશે પોતાને અંતર નથી એવી રીતે जैसे अपने शरीर के और बीच में अपना कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, साव टाळवा योग्य છે. तो ये भी विषय बदलते हैं. यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आ पत्र नो सारांश ये निकले छे, ये पत्र का समराइज करते सारांश ये निकले छे कि मुमुक्षु जीव ने ज्ञानी पुरुष प्रत्ये अभिन्न भाव एटले परम प्रेम आवो जोईए. आपणे जे चाले छे अचल प्रेम 194 में, અને એવી રીતે જેને એક જ્ઞાની મહાપુરુષ પ્રત્યે કોઈ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ વાળા જે કોઈ સાધર્મીઓ છે એને અરસપરસ પણ એવો નિર્મળ પ્રેમ રહેવો જોઈએ. સાધર્મી પ્રત્યે પણ એવો નિર્મળ પ્રેમ રહેવો જોઈએ. એકબીજાને બીજા કોઈ કારણથી નહીં, બીજા કોઈ કારણથી રાગ નહીં કે ભાઈ મને મદદ કરે છે માટે મદદ કરે એટલે એના માટે પ્રેમ થાય, એમ નહીં કે છે. મને અનુકૂળ વર્તે છે એટલે મારી સાઈડ લે છે, હું જે કહું એમાં હા પાડે છે, ખોટું કહું તો એ હા પાડે છે.
બીજા કોઈ કારણથી રાગ નહીં, મને મદદ કરે છે માટે, મને અનુકૂળ વર્તે છે માટે એના ઉપર રાગ રાખવું એમ નહીં. એક ધ્યેય છે બંનેનું, પરિભ્રમણથી છૂટી અને સુખની પ્રાપ્તિ કરવી છે. એવું બેનું એક ધ્યેય છે, એક માર્ગ છે, એક ગુરુ પ્રત્યે બંનેને બહુમાન છે. એ કારણ છે. દ્વેષને તો એમાં અવકાશ જ નથી. राग में पण आटली शरत है, द्वेष तो है ही नहीं दोनों के बीच में, मुमुक्षु के बीच में द्वेष तो होना नहीं चाहिए। लेकिन राग भी कैसा होना चाहिए? निर्मल हेत वाला राग होना चाहिए, संसार वाला राग नहीं होना चाहिए, स्वार्थ वाला राग होना नहीं चाहिए। राग में पण आटली शरत है, द्वेष नो तो अवकाश नहीं। जो एमांथी बोध लेवानो निकळे छे ए पण मुमुक्षुनी बाह्य भूमिका ने समझावे एवी बात छे। साधर्मी साधर्मी वच्चे अन्य प्रकार होवो घटतो नथी। मुमुक्षु बहु विचारवा जेवुं छे, कारण के आवी परिस्थिति तो क्यारेक जोवा मळे। निर्मल हेतवाड़ी तो मुमुक्षु कहे छे बहु विचारवा जेवी आ वात, आ तो विचार कर्यो नथी। पूज्य भाई श्री हाँ खास करीने पोते विचारी लेवा जेवुं छे के मारो आवो कोई प्रकार मारामां उत्पन्न न थाय ए मारे सावधानी राखवा जेवी छे। एवी जागृति अंदरमां होवी जोईए, तो ज आ मार्गमां आगळ वधी शकाय, नहीतर एमां आगळ वधवुं कठिन थई जाय छे। एटले सर्वज्ञानीओए जे ज्ञानी थया एमणे भूतकाळमां मुमुक्षु दशामां आ ज रीते उपाड कर्यो छे। मुमुक्षु दशा अज्ञानी थे जब, तो इस प्रकार से ही आगे बढ़े हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। वर्तमान में पण जे जीवो पात्र छे ते आम ज करे छे, ये पात्रता का लक्षण है। इस प्रकार से जो मुमुक्षु वर्तता है ये पात्रता का लक्षण है, अने भविष्य में पण आम ज करशे। अहींया पोतानी साक्षी मूकी छे, अनुभव कर्यो छे कि ज्ञान प्राप्ति भूतकाल में अमने आथी थई छे। अभी स्वयं का साक्षी देते हैं कि ज्ञान प्राप्ति एथी अमने थई छे, पूर्व भव में कृपाणु देव को इस प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाति स्मरण ज्ञान में उनको पता चला है, वो बात उन्होंने यहाँ लिखी है। आ प्रकारे अमे कोई सत्पुरुष ने शोधता एना योग में आव्या, खुद ने वहां शोध की थी पूर्व काल में, और उनके समागम में आए अने अमने भूतकाल में ज्ञान प्राप्ति थयेली छे, पूर्व भव में थयेली छे। ज्ञान प्राप्ति एथी अमने थई हती, वर्तमाने एज मार्गे थाय। आज भी इसी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अने अनागत काले पण ज्ञान प्राप्ति नो एज मार्ग छे। त्रणेय काले तेमज सर्वशास्त्र नो बोध लक्ष्य जोवा जता एज छे। शास्त्र भी यही बात करते हैं। अहीं आगमनी साक्षी मूके छे, अमे कहीए छीए एम नहीं। बधा शास्त्रनो अंतराशय जोवा जता बधा शास्त्रना बोधनो उपदेशनो अंतराशय अने लक्ष्य कहे छे ए जोवा जता ए ज छे के एक सत्पुरुषने शोध एम कहेवुं छे। अने जे कोई प्राणी छूटवा ईच्छे छे
परिभ्रमण और दुख से अगर कोई जीव छूटना चाहता है, बस आ વાત છે। ભવભ્રમણથી જે કોઈ પ્રાણી છૂટવા ઈચ્છે છે તેને અખંડ વૃત્તિથી, એટલે એમાં જરાય પણ વિસ્મરણ કરીને, એટલે આ વાત ભૂલી જાય એમ નહીં, અથવા એ વાતને વચ્ચે પડતી ન મૂકે, થોડુંક કરીને છોડી દે એમ પણ નહીં। અખંડ શબ્દ વાપરો ને, અખંડ વૃત્તિ એ ખંડ ખંડ વૃત્તિ છે, ક્યારેક કરે ને પછી ક્યારેક ભૂલી જાય। અખંડ વૃત્તિથી એટલે એમાં જરા પણ વિસ્મરણ કરીને, ભૂલીને એ વાતને વચ્ચે પડતી ન મૂકી દે। એટલે જબ તક એ કાર્ય ન હો એ અચળ પ્રેમ ચાલુ રહે, બળે, એ પરિસ્થિતિમાં પોતે ન આવે ત્યાં સુધી એ જ માર્ગ આરાધવો। क्या कहते हैं यहाँ, अगर कोई उसमें क्षति हो, कमी हो, तो यही मार्ग में आगे बढ़ना, ये ज मार्ग आराधवो। ये मार्ग आराध्य विना, ये रास्ते पे चले बिना जीवे अनादिकाळथी परिभ्रमण कर्યું છે। परिभ्रमण का कारण यहाँ खोला है। बीजू બધું કર્યું છે। धर्म के नाम पे बहुत प्रवृत्ति की है। 11 अंग અને 9 પૂર્વનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન અને મુનિ દશા યોગ્ય પંચ મહાવ્રતાદિની ક્રિયા એ બધું કર્યું છે, પણ આ નથી કર્યું એને। એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે। જ્યાં સુધી जीवने स्वच्छंद रूपी अंधत्व है। स्वच्छंद के कारण से क्या होता है, अंधापो थी जाए, अंधापो। ये जो अंधा होता है ना, आंख ब्लाइंड, वो नहीं, उसको तो कुछ दिखता नहीं है। ये जो अंधा है ना, तो उसको मार्ग सूझता नहीं है। स्वच्छंद के कारण से सूझ चली जाती है कि किस मार्ग से मुझे आगे बढ़ना। क्या જ્યાં સુધી જીવને સ્વચ્છંદ રૂપી અંધત્વ છે ત્યાં સુધી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી। એક ન્યાયે તો આ માર્ગ બહુ સહેલો કરી નાખ્યો, બહુ ટૂંકો કરી નાખ્યો, સરળ કરી નાખ્યો। આટલું જ કરવાનું છે तो परिभ्रमणથી छूटी जवाए। लो, जी अनादिकाल थी जो कार्य नहीं हुआ है, हाँ? और अनंत दुख का भोगवटा क्या उसके फल स्वरूप, ये कार्य करने से पूरा हो जाता है। लो, એટલે કે સત્પુરુષના ચરણ કમળ અને સમ્યક પ્રતિદિમાં क्या સુધી નથી આવતો, कोई जीव ये परिस्थिति में नहीं आ रहा है कि જ્યાં સુધી એને કંઈક ને કંઈક સ્વચ્છંદ છે। સ્વચ્છંદ क्या है ये समझाया यहाँ। क्या અને ત્યાં સુધી એને રસ્તો પકડવો બનતો નથી, એ રસ્તે સાચા રસ્તે ચડી શકતો નથી। अभी ये परिस्थिति जिसकी है उसको भी कृपालुदेव मार्गदर्शन दे रहे, उसको क्या करना। એવું અંધત્વ ટાળવા માટે જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો। હવે શું નવેસરથી आज मेरा जन्म हुआ, ऐसा नया जन्म चालू करना। क्या कि मार्ग का विचार करना। पहले क्या करना, पुरानी बात सब भूलकर मार्ग नो विचार करवो।
સત્પુરુષના વિષયમાં ઘણા પડકાર છે, અનેક પડકાર છે, એનો વિચાર કરવો. બીજું, दृढ़ मोक्ष इच्छा करवी, ये करना कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है. मेरा शेष का यही एक कार्य है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और उसका जो कारण है वो सम्यक दर्शन, वो मुझे यही प्राप्त करना है. दृढ़ मोक्ष इच्छा करवी, શું હેતુથી વિચાર કરવો કે હવે છૂટવું જ છે, બહુ દુઃખ ભોગવ્યું, હવે મારે દુઃખ ભોગવવું નથી, કોઈ પણ રીતે મારે છૂટી જવું છે. એ પ્રકારે दृढ़ मोक्ष इच्छाથી એનો વિચાર કરવો, એ करना, विचार करना है इसका. એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું, એટલે કે એમાં એને વિસ્મરણ न करવું, ये बात को भूलना नहीं. यही बात का वो सतत विचार करना कि जब तक वो निर्णय न हो. विचार तब तक चलना चाहिए कि जब तक इसका निर्णय न हो. तो मार्गनी प्राप्ति થઈ. एक ज पैराग्राफ में बोल दिया, नहीं है तो ऐसा वो करने से मार्ग की प्राप्ति थई, अंधत्व टळे. ये निसंक मानजो, ये तो कृपालुदेव गारंटी देते हैं. अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व टल जाएगा. श्वसन चढ़े छे अने मार्ग प्राप्त थाय छे. अनादिकाळथी जीव अवड़े मार्गे चाल्यो छे, अवड़े एटले खोटे मार्गे चाल्यो छे. એટલે અવળા માર્ગમાં રહીને જો કે તેણે જપ તપ શાસ્ત્ર અધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે, સાચા માર્ગે આવ્યા વિના અવળા માર્ગમાં રહીને તેણે એટલે જીવે જપ તપ શાસ્ત્ર અધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે, કરોડો વાર કર્યું છે. તથાપી જે કાંઈ પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું, એટલે આ અવશ્ય કરવા યોગ્ય નહોતું. સમજાય છે કે નહીં? જે કાંઈ પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી. તો એ શું છે? જે અવશ્ય કરવા જેવું છે કે જે અમે પ્રથમ જણાવ્યું છે, અમે પહેલા જ કહી દીધું. આ સત્પુરુષના ચરણારવિંદ સેવવાની પહેલી વાત કરી છે, એ એને નથી કર્યું, બાકી બધું કર્યું છે. પ્રશ્ન: વર્તમાનમાં પુણ્ય યોગ થયો ત્યારે સત્પુરુષ મળ્યા, આ વિષય બહુ ચર્ચાય છે અને શ્રદ્ધામાં બુદ્ધિમાં પણ વાત બેસે, પણ પછી જે ભાવથી કહેવા માંગે છે એ ભાવથી એના પ્રત્યે સરવાર પણ બુદ્ધિ આવી જોઈએ. प्रॉब्लम जो बुद्धि का है, ये यहाँ प्रश्न किया कि हमें कोई ज्ञानी पुरुष तो मिले और ये विषय की बहुत चर्चा हुई है क्या, और बुद्धि में भी ये बात बैठती है. समझाई છે અમને આ વાત કે વાત તો બરાબર લાગે છે, પણ જ્ઞાની પ્રત્યે સર્વાપણ બુદ્ધિ આવી જોઈએ, નથી આવતી. આ પરિસ્થિતિ છે એમ કે છે. સમજાય છે કે નહીં? તો શું प्रतिबंधक कारण रही जाए छे? तो फिर क्या कारण से ऐसा नहीं हो रहा है? समाधान: ये तो सामान्य रीते
પોતે તપાસે तो व्यक्तिगत रीते પોતાને ખ્યાલમાં આવી જાય, स्वयं को ऊंडाण में जाकर तपास करनी चाहिए कि मारा परिणाम अधिक पड़े क्या रस ले से, मेरे परिणाम जो है वो विशेष प्रकार से कहाँ से रस ले रहे हैं। व्यक्तिगत रीते तो પોતાના પરિણામનું અવલોકન હોય એને તો પકડાઈ જાય, जो अंदर में ऑब्जर्वेशन करता है अपने परिणाम का कि मेरे परिणाम कहाँ झुक रहे हैं, क्या तो पकड़ में आ जाता है। પણ સામાન્ય રીતે પોતાના ઉદય બાજુના જ બધા પરિણામ હોય છે। जनरल पोजीशन क्या है कि जो भी उदय आता है पूर्व कर्म का फल और उसके फल से जो संयोग आते हैं, संयोग मिलते हैं, कुटुंब परिवार घर बार पैसा गाड़ी बंगला शरीर से लेकर सब, क्या समूचे बात लईए तो कोई पण जीव ने परिणाम कई बाजू जाए छे कि उदय तरफना परिणाम जाए छे। एना परिणाम जे एने मळ्युं छे पूर्व कर्म अनुसार तो ए तरफना ज एना परिणाम छे अने उदय भावनी अंदर एने तीव्र रस छे। अगर अंतर में हम तपासे तो ये पता चल जाएगा कि हमको तीव्र रस कहाँ है कि पूर्व कर्म के फल स्वरूप जो भी हमें मिला है, जिसको जो भी मिला है, એવું નથી कि बीजा ने મળે એવું મને મળે तो મને થાય, એમ नहीं। जिसको जो भी मिला है, कम मिला है या ज्यादा मिला है, लेकिन उसके परिणाम उदय तरफना परिणाम उदय भावनी अंदर तीव्र रस है। ये झोपड़ी में जो रहता है ना, उसको भी झोपड़ी के अंदर में जो जो चीज है ना, उसका ममत्व बहुत होता है। ये पण एक वस्तु खोवाई जाए तो एने तकलीफ थाय, एथी लईने गमे तेटला पैसा होय ए बधाने आवा प्रकारना परिणाम होय छे। उदय भावनी अंदर तीव्र रस छे, एनी अधिकता छे। ये अधिकता ज्यां सुधी छूटती नथी त्यां सुधी जीव मार्गनी बाजू वળી सकतो नथी, आवी सकतो नथी। ये रुकने का कारण यहाँ है क्या कि प्राप्त संयोग पूर्व कर्म के फल स्वरूप जो भी मिला है, क्या उसके अंदर तीव्र रस है, उसकी अधिकता है, उसका महत्व है। और वो अधिकता जब तक छूटती नहीं है ત્યાં સુધી જીવ માર્ગની બાજુ વળી શકતો નથી, આવી શકતો નથી। એ ખ્યાલમાં આવે એવી વાત છે, પોતે તપાસે તો ખ્યાલમાં આવે એવી વાત છે। ये जो प्रश्न का समाधान है, ये प्रश्न क्या था ये हम फिर से देखते हैं कि ज्ञानी प्रत्ये सर्वापण बुद्धि आवी जोईए नहीं आवती। इसका कारण क्या है ये बताया है क्या कि उदय जो प्राप्त उदय है उसमें जो तीव्र रस है और वो उदय की जो अधिकता है, ये जब तक छूटती नहीं है, समझाय छे कि नहीं? ये जे प्राप्त उदय छे ने आपड़ा उदय एटले जे बार में आपने मेळ्युं छे, घर बार कुटुंब परिवार पैसा बैंक बैलेंस, हाँ जो भी हमें मिला है हमारे पूर्व कर्म का वो फल है, क्या उसमें तीव्र रस है और उसका महिमा है, उसको एनी किम्मत छे, एनी अधिकाई छे। ये जब तक छूटती नहीं है, ये पकड़ को ढीली जब तक नहीं करता है, ત્યાં સુધી जीव
मार्ग की बाजू वड़ी सकतो नहीं, ये अंतर में जा नहीं सकता है, क्योंकि उसका उपयोग वहीं रुका हुआ है, किसी ने पकड़ कर रखा है। उदय रूपी जो पदार्थ है वो उसका उपयोग, जो अंतर्मुख होने का उपयोग है, उसको पकड़कर वहां रखा है। तो फिर वो जीव अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता नहीं। बहुत अच्छी बात की है। जो भी हमें प्राप्त उदय मिला है उसमें हमें निरसपना केळवना चाहिए। એટલે प्रैक्टिस करना। क्या खाली समझने से नहीं होता है, चिन्हवाणी पढ़ने से नहीं होता है, लेकिन वो उदय है, ये इसमें सुख नहीं है, इससे मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और वो पदार्थ कोई मेरे नहीं है, वो कुछ काल के लिए मेरे साथ है, वो कोई कायम रहने वाले नहीं है। वो कायम रहेंगे ऐसा वो संबंध करता है, जाने का कायम मारी हारे રહેવાનું છે। वो उसको रस होने का कारण हो जाता है। उसमें रस क्यों आता है कि उसको नित्य देखता है, क्या कायम रहने वाले देखता है। अनित्य अगर देखे उसको तो रस टूटने लग जाता है। ये कितना समय मेरे साथ रहेगा। जो पदार्थ का प्रथम संयोग होता है वो पदार्थ मेरे साथ कायम रहेगा ऐसे समझकर उसके साथ संबंध जोड़ता है, उसमें एकाग्रता करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी पदार्थ का संयोग हो तो वही समय उसका वियोग देखो। આ ક્યારે મારાથી જુદું થાય જુઓ, કેમ કે એક દિવસ થવાનું તો છે જ। जो संयोग होता है वो काल में हमको ये देखना चाहिए कि ये मेरे से कब अलग हो जाएगा या मैं इससे कब अलग हो जाऊंगा। संयोग में वियोग देखो तो रस अपने आप कम हो जाएगा। सूर्यंगदाग सूत्र में ऋषभदेवजी भगवाने ज्यां 98 पुत्रों ने उपदेश्या छे, मोक्ष मार्गे चढ़ाव्या छे, त्यां एज उपदेश कर्यो छे। हे आयुष्य मनो, क्या उपदेश दिया है और उनको मोक्ष मार्ग में कैसे चढ़ाया है, कौन से उपदेश से चढ़ाया है। ऋषभदेव जी भगवान ने उनके जो 98 पुत्र है और 2 ये भरत और बाहुबली जी है ना, टोटल 100, बाकी 98, 98। आ जीवे सर्व कर्यु छे। क्या उपदेश दिया है कि ये जीव ने धर्म प्राप्ति के लिए सब प्रकार का प्रयास किया है। एक आ विना आ એટલે શું તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન તેનો ઉપદેશ તે સાંભળ્યા નથી, સાંભળ્યું જ નથી, સાંભળ્યું છતાં સાંભળ્યું છે એમ રહેવા દીધું નથી, ન સાંભળ્યા બરાબર કર્યું છે। સત્પુરુષનું કહેલું વચન તેનો ઉપદેશ તે સાંભળ્યા નથી અથવા રૂડે પ્રકારે કરીને ઉઠાવ્યા નથી। બહુ પરમ પ્રેમથી પરમ ભક્તિથી એને આદર કર્યો નથી, એ વાત ઉઠાવી નથી, અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક
એટલે आत्म स्वरूप ની પ્રાપ્તિ કહ્યું છે। लल्लू जी मुनि को लिखा है ना ये पत्र, वो सामायिक करते हैं ना, हाँ? तो उनको कहा है कि मुनि का सामायिक क्या है? आत्म स्वरूप की प्राप्ति। हाँ? जो आ प्रकार करो तो એને અમે સામાયિક કહ્યું છે। क्या मुनि છે ને એટલે મુનિઓનું સામાયિક છે એમ કહ્યું। મુનિને પત્ર લખેલો છે। ટાઈમ હો ગયો, થઈ ગયો ને ટાઈમ કે છે? જે વાત આવી કે રિલિજન પાછું એકદમ નવેસરથી ચાલુ કરવું, તો એમાં એમ વાત આવી કે માર્ગની વિચાર કરવી, તો એમાં વિચારમાં શું લઈ શકાય, શું વિચારવું? એટલે નવો વિચાર ચાલુ કરવો જોઈએ માર્ગ સંબંધી, અને પૂર્ણ સુખ થવાની એક ભાવના કરવી જોઈએ કે મારે હવે સુખી થવું છે, મારે પૂર્ણ સુખ જોઈએ। મેં અનંતકાળમાં બહુ દુઃખ ભોગવ્યું છે, હવે મારે દુઃખ ભોગવું નથી। શું એ નિશ્ચય કરીને કેવી રીતે આ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય એનો વિચાર કરવો। સાહેબજી, હમણાં જે રેફરન્સમાં વાત આવી 470 પત્રમાં કે મુમુક્ષુ ને મુમુક્ષુ વચ્ચે જે એક ગુરુને માનતા હોય ને એવા આત્મીયતા હોવી જોઈએ, નિર્મળતા હોવી જોઈએ, ને ઇન કેસ ક્યારેક લાગે કે એવા ડિફરન્સીસ અરાઇઝ થઈ રહ્યા છે, ડિફરન્સીસ થોડા થઈ રહ્યા છે એવો ખ્યાલમાં આવે તો એને સોલ્વ કેવી રીતના કરવા, કેમ સોલ્વ કરો? ડિફરન્સ તો આપણે આપણામાં ચેન્જ કરવાનું છે, સામેમાં કઈ ચેન્જ નથી કરવાનું। સામે વાળો સામેમાં કરશે। કોઈ પણ માટે એનું હિત થાય એવું જ્ઞાનમાં અવકાશ રાખવો। શું સમજાય છે? એ પ્રકારે એનો વિચાર કરવો કે ઠીક છે, ભલે આજે ડિફરન્સ છે પણ એ બધા મટી જશે અને એનું પણ હિત થશે, એમ વિચાર કરવો। એ પ્રકારે સાહેબજી, એક વાત એવી આવી કે વાણી દ્વારા જ્ઞાની પુરુષ છે એવી પ્રતીતિ થઈ ગઈ હોય કે એ જ્ઞાની પુરુષ છે, તો આગળનું જે કાર્ય છે આપણે આવ્યો તો ને વાણી દ્વારા, હા, અને જરાક વિષયમાં થોડીક પછી ચર્ચા થઈ હતી। પૂર્વાપર અવિરુદ્ધપણમાં એક થોડીક ચર્ચા ચાલી હતી, એટલે કે પૂર્વે કંઈક કહે એને જ આગળ જઈને ઉથાપે એવું જ્ઞાની કરે નહીં, એમ જે ચર્ચા થઈ હતી થોડી। કયો નંબર છે? 679। તો થોડુંક આપણે આમાં જોઈ લઈએ ફરી પાછું। ત્રીજી લીટી થી લઈએ ईच पैराग्राफ में, तीसरा લીટી है ना, सर्वथी उत्कृष्ट गुण है જે પૂર્વાપર અવિરુદ્ધપણું તે શુષ્ક જ્ઞાનીની વાણીને વિશે વર્તવા યોગ્ય નથી। ठीक है, तो इसमें जो पूर्वापर अविरुद्धपणु किस विषय के बारे में है वो आगे लिखा है कोमा कर। केम के यथास्थित पदार्थ दर्शन तेने होतुं नथी।
आत्म पदार्थ और आत्म प्राप्ति की जो विधि है उसमें पूर्वापर अविरुद्धपणा नहीं होता है। क्षयोपशम की बात में अगर कोई फर्क हो, शैली में फर्क हो, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां कॉमा लिया है, माने पूरा सेंटेंस अभी हुआ नहीं है। फिर से पढ़ते देखो, सर्वथी उत्कृष्ट गुण जे पूर्वापर अविरुद्धपणું તે શુષ્ક જ્ઞાનીની વાણીને વિશે વર્તવા યોગ્ય નથી, કેમ કે યથાસિદ્ધ પદાર્થ દર્શન એટલે આત્મ પદાર્થ, એનું દર્શન તેને હોતું નથી। तो आत्मा में जो विरुद्ध धर्म है, एक अनेक नित्य अनित्य, ये तो जिसको आत्म पदार्थ का अनुभव है उसको पूर्वापर अविरुद्धता होती है, उसको इसमें विरोधाभास होता नहीं है। दूसरा तो क्या है कि क्षयोपशम की जो बात है वो आपने क्या कहा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ना, पता है कहाँ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोई ऐसा चला है विषय? सम्यक ज्ञानी को क्षयोपशम ज्ञान की भूल का कोई कमल भाई बोल रहे थे, तो आया है। हाँ, तो देखना पड़ेगा। और कहाँ है वो भी याद नहीं, तो बाद में जरा ढूंढ कर बताइए। हाँ, ये ना तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये है वो नहीं है, ऐसा कर कर पूरा समझ में आ जाएगा ना आपके को। એટલી નિશંકતા થઈ ગઈ હોય પછી અંદરના શ્રદ્ધા જ્ઞાનને એ ઓળખવાનું કાર્ય હોય। એક વાત આ બી આવે છે, એક વાત આ પણ છે ને, એકવાર મને ખબર નથી કે જ્ઞાની છે કે નહીં, એવી રીતે ઝીરો કરીને બેસવાની વાત પણ આવે છે। પણ જ્યારે મારા માઇન્ડમાં એ નિર્ણય થઈ ગયો છે કે મારે तो बे प्रकार છે ને, તો એક તો વાણી થી થયો અને એક તો અંતર પરિણમનથી થયો, તો બીજો પ્રકાર તો થયો નથી ને। જેને પહેલો પ્રકાર થયો છે અને બીજો પ્રકાર થયો નથી, શું બરાબર છે? તો એને વાણીથી થયેલો નિશ્ચય છે એમાં પણ ન્યુટ્રલ થઈ જવું જોઈએ, નિરપક્ષ થઈ જવું જોઈએ। તો એનો જે ઉપયોગ છે એ સતેજપણે શોધ કરે। જો ન્યુટ્રલ નહીં હોય તો ક્યાંક ભૂલ થવાના ચાન્સ છે અને પાછા થઈ શકે છે। કેવા પ્રકારની ત્યાં ભૂલ મારી થાય પાછું એમ મને ખબર નથી, મારે તપાસવાનું છે। જેમ કે કોઈ નવી વ્યક્તિ તમારી સામે આવે ફર્સ્ટ ટાઈમ અને તમને કોઈ પૂછે કે આ જીવ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે, તો તમે શું કહેવાય ને? મને કે એનું નામ ન્યુટ્રલ, મને ખબર નથી કે આ જ્ઞાની છે, મને ખબર નથી કે આ અજ્ઞાની છે, મને બે નથી ખબર। પણ હવે હું તપાસ કરીને તમને કહીશ કે તપાસનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું એમ, સમજાય છે? એટલે જ્ઞાની છે એવો નિશ્ચય તપાસના અંતે આવવો જોઈએ, તપાસની પહેલા નો આવવો જોઈએ, એનું નામ ન્યુટ્રલ। साहिब जी ऐसे कोई उदय आइडेंटिफाई करे हूँ जिसमें लग रहा है कि रस है, इसीलिए जो परमात्मा बुद्धि आनी चाहिए वो उसमें रुकावट है, जैसे अभी पता चला सत्संग में। तो उन उदय में उसको तत्व विचार करके मिटाना। तो पहले तत्व विचार से ही होता है कि भाई इसका मूल्य क्या है। ये सब तो अनंत बार मिला है, इससे भी अधिक मिला है। आज ये राजा थियो छे,
નિખારી પણ થયો છે. तो अनंत काल में जितने परमाणु है ना, सब परमाणु का संयोग हुआ है उसको. उसमें कोई अधिकता क्या है कि ये मिला है तो रस लेना, उसमें एकाग्र करना, ये प्रकार विचार से हमें छोड़ना चाहिए. नहीं तो क्या होता है कि वही बाजू हमारा झुकाव होने से हम अपना आत्मकल्याण को छोड़ देते हैं. साहब जी, इधर स्वच्छंद दूर करने के लिए जो मार्ग का विचार करने के लिए कहा है, उससे स्वच्छंद कैसे एग्जैक्टली दूर होगा? अपना दोष का स्वीकार कोई बताए आपको तो आपको इंस्टेंट स्वीकार हो, इस दशा में आपको आना चाहिए. इंस्टेंट माने हाँ, वो बताता है और आपको अंदर में देख लेना कि हाँ मेरे में ये दोष है और स्वीकार करना. और दोष बताने के वाले के प्रति द्वेष नहीं होना. ऐसा सतत प्रयास अगर जीव करेगा तो उसका स्वच्छंद एकदम नीचे चला जाता है. और ये प्रयास जारी रखना कि जब तो वापस स्वच्छंद ऊपर आ जाता है. ये प्रयास जारी रखते हुए दूसरे प्रयोग में आना आगे के. और अगर आप ये प्रयोग है वो धारावाही करेंगे ना तो ये अपने आप चलेगा एक टाइम के बाद. और आगे का प्रयोग आप नया सुख बुद्धि आदि का कर सकते हो. साहिब जी, अभी जो 401 में बात आई थी कि एक पति पत्नी जो मुमुक्ष है उसके बीच में अरस परस का सत्संग रहना चाहिए. 470 में अभी आया ना 401, हाँ 470 में. हाँ ठीक है. तो पूछना था कि अरस परस का सत्संग मतलब क्या लेना? जैसे कि एक मुमुक्षु के प्रति दूसरे मुमुक्षु को या भाई के साथ जो निर्मल हेत है क्या, उस प्रकार पति पत्नी के बीच में, क्योंकि दोनों मुमुक्षु है, क्या दोनों को आत्मकल्याण करना है. तो ये निर्मल हेत अगर नहीं आएगा तो वो तो है, तो फिर सत्संग कहाँ से लंबा चलेगा एक दूसरे के साथ से. और प्रयास ये सब में आगे बढ़ने का कैसे होगा ऐसा. नॉन मुमुक्षु पति के साथ कैसी भावना आनी चाहिए? हाँ, नॉन मुमुक्षु हस्बैंड हाँ और वाइफ. हाँ, उनके लिए भी हमको तो निर्मल हेत का प्रयास इसलिए करना चाहिए कि वो निर्मल हेत देख कर मार्ग में आ जाए. जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख
रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा तो, जो कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। मने कोने कहान गुरु के वाहसे, मने मने कोने कहान गुरु के वाहसे, मने कोने कहान गुरु की वाहसे के वाहसे शू करता हसे, के वाहसे शू करता हसे। शेर
કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે સિમંદર પ્રભુની વાણી સુણીને સિમંદર પ્રભુની વાણી સુણીને સિમંદર પ્રભુની વાણી સુણીને સિમંદર પ્રભુની વાણી સુણીને સંદેશો લાવનાર કેવા હશે સંદેશો લાવનાર કેવા હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે એ કેવા હશે શું કરતા હશે કેવા હશે શું કરતા હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે પરમાગમનો સાર સમજાવી પરમાગમનો સાર સમજાવી પરમાગમનો સાર સમજાવી પરમાગમનો સાર સમજાવી હૈયા ડોલાવનાર કેવા હશે હૈયા ડોલાવનાર કેવા હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે દર્શન મહત્તા ને ચેતન ની શુદ્ધતા 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 વિશ્વે ગજાવનાર કેવા હશે વિશ્વે ગજાવનાર કેવા હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે નિશ્ચય બતાવનાર શાસન શોભાવનાર નિશ્ચય બતાવનાર શાસન શોભાવનાર નિશ્ચય બતાવનાર શાસન શોભાવનાર નિશ્ચય બતાવનાર શાસન શોભાવનાર સુદાના સિંચનાર કેવા છે સુધાના સિંચનાર કેવા છે હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે ઉજંબાનંદન મોતીકુળ ચંદન ભુજંબાનંદન મોતીકુળ ચંદન ઉજંબાનંદન મોતીકુળ ચંદન ભુજંબાનંદન મોતીકુળ ચંદન એ ભક્તોના તારણહાર કેવા છે ભક્તોના તારણહાર કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે વિદેહી મહેમાન ઉમરાડા આવ્યા વિદેહી મહેમાન ઉમરાના આવ્યા વિદેહી મહેમાન ડુંગરપુરી આવ્યા પૂરી આવ્યા ભક્તોના ભગવાન કેવા હશે ભક્તોના ભગવાન કેવા હશે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે રે મને કોને કહાન ગુરુ કેવા હશે વિદેહી મહેમાન અંતરમાં આવ્યા વિદેહી
महान गुरु केवा शेर मने महान गुरु केवा जे केवा हसे शू करता हसे केवा हसे शू करता हसे मने कोने कहान गुरु केवा शेर मने कोने महान गुरु केवा हसे गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की तारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी भव सागर में नीर अपारा भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी पल में लिया उबारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीना मारी सबको दीना मारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी हो गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी भेद भाव सब दूर कराया भेद भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योति निहारी घट घट ज्योति निहारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन
दुविधा टारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा टारी जोग जुगत गुरु देव बताई योग जुगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी मानुष देह सुधारी गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा टारी हो गुरु चरण शरण बलिहारी मेरे मन की दुविधा टारी ક્ષમાપના દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળ પડ્યું થયું નહીં. પણ આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહ આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રય અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ તે પુરુષને આશ્રય આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિશે વર્તે છે તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમ કે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થઈ તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. આ દેહનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે એવી ભાવના. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલો પરોપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોનો જય હો. સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો જય હો.